Bismillahirrahmanirrahim. Before we officially begin our webinar, let's start with the beautiful recitation of Holy Quran. I would like to invite Ms. Samrina Kosar to recite some verses of Quran. Please, Ms. Samrina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. Jazakallah. Assalamu alaikum everyone and welcome to our webinar today on nursing and technology. My name is Naima Jahan, student of Generic BSN Semester 8 of Indus College of Nursing and Midwifery, and I'll be your host for this session. I'm excited to explore the intersection of nursing practice and technology. I'm thrilled to see such a fantastic turnout, and I truly appreciate you all taking the time to join us. As many of you know, the healthcare landscape is evolving at an unprecedented pace, driving in large part of advances in technology. From electronic healthcare records to telehealth services, technology is fundamentally changing how we deliver patient care, and nursing is at the forefront of this transformation. Today we will explore several vital aspects of nursing and technology with our extraordinary speakers. We will discuss how technology is enhancing patient care, improving nursing efficiency, and even shaping the educational pathways for future nurses. Before we dive in, I would like to thank Sir Hakim Shah, Principal of Indus College of Nursing and Midwifery, Sir Danish Siddiq, Vice Principal of Indus College of Nursing and Midwifery, and Subject Coordinator Sir Muhammad Yusuf Bhatti, Indus College of Nursing and Midwifery, and our respected speakers, Sir Ehtisham Parvez, Lecturer of Indus College of Nursing and Midwifery, Ms. Kamal Ramzan, CNI, Indus College of Nursing and Midwifery. Special thanks to Ms. Arisha Irshad, who is joining us from AKU Emergency Department, and also special thanks to Sir Zahur, who is Infection Control Practitioner, joining us from Infection Control Department, and Sir Wahid Zaman too, who is a MSc student from Sohail University, and all my amazing participants. Now let's set the stage with a brief overview of why the intersection of nursing and technology is so crucial. Integration of technology into nursing practice streamlines workflow, but also leads to better patient outcomes. So without further ado, I would like to invite Ms. Tahira Mustafa, BSN Semester 8, Indus College of Nursing and Midwifery, to get started with the introduction about the topic. Ms. Tahira Mustafa. Thank you so much, Naima. So today's our topic is nursing and technology. हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि नर्सेस के जो रोल है या नर्सिंग कैरियर में टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करती है, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक MR नंबर्स हो या हमारे पेशेंट की रिपोर्ट कीपिंग हो या पेशेंट की सेफ्टी को ज़्यादा मज़ीद बेहतर बनाना हो। तो इन सब में जो टेक्नोलॉजी है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इस मुताबिक हैं कि पहले तो हमने इंट्रोडक्शन करना है कि नर्सिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और नर्सिंग एजुकेशन के अंदर स्पेशली टेक्नोलॉजी का क्या रोल है।
और इम्पैक्ट क्या है एजुकेशनल फील्ड के अंदर। और हाई फिडिलिटी मैनिक्विन्स, जिसे हम डमीज बोलते हैं, जो हम यूज कर रहे होते हैं हमारी स्किल्स के दौरान, उनके अंदर कुछ कुछ डमीज आजकल ऐसी इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें एनाटॉमिकली वो पोजीशनिंग, ब्लड, सब कुछ मौजूद होते हैं, जो आजकल हमारे जो रिसेंट जो हमारी नर्सिंग एजुकेशन फील्ड है उसमें जो मुतारिफ की गई हैं। इसके अलावा हाईलाइट करेंगे हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को कि किस तरीके से वो एज ए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो टेक्नोलॉजी हमारी नर्सिंग कैरिकुलम कैरियर को ज़्यादा अच्छे से एम्फसाइज करती है। और देखेंगे कि ट्रांजिशनल रोल क्या है नर्सिस को, जो हमारी जो लास्ट जो प्रीवियस जो हमारी नर्सिंग टेक्नोलॉजीज थी उनको किस तरीके से हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से रिप्लेस किया है। और इसके अलावा हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो चेंज किया है। और रोल देखेंगे नर्सिस का कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शंस है उनको कम करती है, और किस तरीके की जो न्यू न्यू जो एडवांसमेंट है पीपीई को लेके वो जो है मुतारिफ करवाई गई हैं। तो ये सारा जो है आजकल आज का जो हमारी डिस्कशन है इसके मुताबिक होगी। इंट्रोडक्शन। नर्सिंग टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हेल्थ केयर एंड स्ट्रीमलाइन टास्क एंड एनहांस द एक्यूरेसी। नर्सिंग के अंदर टेक्नोलॉजी हमें हमारे जो टास्क हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो पेशेंट से लेके हमारे एजुकेशनल सिस्टम तक जो भी है उनको स्ट्रीमलाइन करने में एनहांस करती है, और एक्यूरेसी, ताकि जो है लो चांसेस हैं किसी भी एरर को डिटेक्ट करने के, ताकि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी उनको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है। और इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो एमआर नंबर्स या टेलीमेडिसिन है उनको ज़्यादा पर्सनलाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करती है हमारी टेक्नोलॉजी। जो नर्सिंग फील्ड में आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी, लाइक पहले हमारे पास क्या होता था कि हमारे जो रिकॉर्ड होते थे वो पेपर बेस्ड होते थे, लेकिन अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आ गए हैं, एमआर नंबर्स जैसे। इनके वजह से पहले बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, लाइक अगर कोई एक पेशेंट है जिनका नाम, एज और जो कास्ट है वो सेम है, और इनके वजह से उनकी जो डेटा थी वो मैनिपुलेट हो जाती थी। लेकिन जब से एमआर नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हमारे पास मुतारिफ हुए हैं तो उनसे ये इनके अंदर जो है एक्यूरेसी और जो है ना लेस एरर्स जो हमें देखने को मिलते हैं। और लास्टली हम देखते हैं कि नर्सेस किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकती हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकती हैं अदर नर्सेस से। जैसे आज हम वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं, हर कोई अपने घर पे बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के हमारा वेबिनार देख रहा है, तो ये जस्ट बिकॉज पॉसिबल है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये इनोवेशंस है जो शेप कर रही हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को फर्दर मजीद बेहतर बनाने के लिए। रोल क्या है टेक्नोलॉजी का नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर? यही कि हमें पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग कर सकते हैं वर्क फ्लो को, जो हमारा वर्क है वो ज़्यादा टाइमली डन हो जाता है टेक्नोलॉजी के वजह से। और इम्प्रूव करते हैं कम्युनिकेशन इम्प्रूव हम इस तरीके से करते हैं कि नर्सेज सिर्फ नर्सेज ही हॉस्पिटल में नहीं होती हैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं और हमारे न्यूट्रिशनलिस्ट भी होते हैं जो पेशेंट की जो हेल्थ है उसको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, तो उनको उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए और एक अच्छा डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि पेशेंट की जो हेल्थ है वो किस तरीके से जल्दी इम्प्रूव हो सके। और ये कुछ हमारे आज की जो डिटेल्स हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सर एहतिशाम टू कंटिन्यू अवर फर्दर टॉपिक। Okay, thank you so much, Tahira, for a brief introduction. I just need a moment to start sharing my screen. Sure, sir. Hello, Tahira. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir, it is. Okay. Good afternoon, everyone, and Assalamu alaikum. Today, I will be speaking about the impact of technology in nursing education. A topic to all of us, very close to all of us, navigating both the classroom and the clinic. So before starting the session, I would like you all to imagine a nursing student on the left hand preparing for their first emergency care clinical rotation. He is confident with the theory, but terrified of making a mistake on a real patient.
Whereas you can see the other nursing student and imagine her. She gets to practice on a high fidelity stimulator that reacts to every intervention, every mistake. By the time she reaches the ward, she is not just prepared, she's confident, and she is composed as well. Traditional nursing education often struggles to break the gap between classroom theory and clinical competence. This is where technology steps in, not to replace our teaching, but to amplify it. The goal of this talk is to explore how technology is reshaping our learning experience, making it more accessible, interactive, practical, and collaborative. So let's begin with the accessibility. As Tara already mentioned, that we are here on a single platform from different locations, from different platforms, even from different institutions joining this webinar with a very easy access through the Zoom platform or whatever the technology is facilitating us. So talking about the accessibility, e-learning platforms like Moodle, which we are using in the Indus Hospital, Indus College of Nursing and Midwifery, that allow students to log in from anywhere to watch lectures, download readings, or complete assignments, even while juggling shift work or personal responsibilities. Then comes the mobile apps. That is another game changer, offering quick access to drug guides, anatomy visuals, and clinical checklists right from our pockets. There's this saying from Billing and Halstead from his article of 2020 that says technology bridges geographical and temporal gaps, allowing continuous learning beyond the classroom walls. Technology also makes learning more active and engaging. For example, simulation-based learning, like using VR goggles or high-fidelity mannequins such as SimMan 3G or Victoria, enable students to practice CPR delivery or emergency care in a safe environment. And then there's gamification, where quizzes, leaderboards, and clinical challenges turn learning into a competitive and fun process. What's the result here? Better focus and a better memory retention. This shift, this shift from passive lectures to interactive tasks promote critical thinking and deeper learning. Then another area where technology shines is feedback. For example, through virtual OSCEs and scenario builders, students receive immediate insights. For example, if you hesitated on the medication or if your decision making was spot on. Such platforms using learning analytics tracks performance trends, helping educators offer tailored support and helping students identify gaps early and self-correct before it becomes a problem in clinicals. Then comes the gap between theory and practice. Often students grasp theory but freeze in practice. Here is where AR and virtual patient simulators play a vital role. They let students rehearse real-life decision-making without real-life risk. There is one another article by Jeffries from 2015 that says virtual environment offers a unique space for rehearsing patient care without compromising safety. This practice builds not just skills, but confidence and clinical reasoning. And finally, technology connects us all. Online platforms like Zooms or Teams allow nursing, medical pharmacy, and allied health students to discuss cases together, mirroring real world teamwork. This promotes not just content, but understanding as well, and also communication, empathy, and interprofessional awareness. So, with this talk, I would like to wrap up technology in nursing education. It enhances access and engagement, prepares students through simulation, provides personalized real-time feedback, bridges the gap between theory and practice, and promotes teamwork across disciplines. These are my references, and I would like to conclude with a quotation that says, I'm sorry. Okay, sorry. Okay, I would like to end this session with the quotation from George Couros, a speaker and a writer from Leadership, that says, technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers
can be transformational. That's all from my side. Thank you so much. Thank you so much, Sir Ehtisham, for your valuable insight on the impact of technology in nursing. I'm pleasure to invite our honorable speaker, Staff Arisha from the Emergency Department AKU. She is a dedicated professional with valuable experiences in clinical care and emergency responses. Today, she will be sharing a very important and relevant topic, emerging technology in promoting evidence-based practice. Staff Arisha Irshad, we warmly welcome you and respectfully invite you to take the stage and share your knowledge with us. Miss Arisha Irshad. Hello, Assalamualaikum. Am I audible? Yes, you are, ma'am. All right. So, a very congratulations to you all. Like, you are just reached on the, last year of your BSN nursing. So, congrats for your achievement. Thank you so much, ma'am. All I can say, I don't want to go for flexible complexes. I just want to say that as being a newbie nurse, we all feel hesitate to start our clinical area. I know that you guys are hesitated right now that how you're gonna perceive and work in your particular job, all right? So right now, I just want you to guys to understand that your work is a battlefield. हम बिल्कुल जंग के मैदान में हैं. And here, our weapons is our technology. And I'm here to prove why. For example, a person collapsed in a shopping mall, and we guys, and we all are there, and we know how to work, we know everything. But instead of like being the one who is giving a CPR, is we will be able to save a person's life if we don't have a saturation pump, if we don't have a vital signs, if we don't have a ventilator and everything. There's a big fat no. It makes sense that we can't do anything without technology. And the same person, if fell in ER or in any kind of institute, in any kind of hospital, we are able to save that life. Why? Just because we know that we have technology. And as being an ER nurse, we got to know that if person came into an ER and we triaging, how we do triaging, we need machines. At the end of the day, we need technologies. So let's start from that. As being in ER, we get to know that whenever you are, we have access to persons, blood tests, to everything, to even medications, what are given here in AKU. You can go through family hifazat, like instead of like things writing down, we can access an online stuff. And is being an ER staff and being a nurse here in AKU, we have the application where we can relocate that where our patient is, what's the diagnosis, and what kind of medications are given. How lovely the transparency is. Suppose if my mom is in ER and I won't be able to hear, but still through the app, I know that what's going on. I know what lab tests are given. I know what the medications are given. How smoothly the things are given. And in ER, we go that someone is announcing for resuscitation. And the patient land. Someone announced in the speaker ring off, we got a sound in our ear. It's all about technology. And in court, we usually, I have witnessed court of 2 hours, the blue court. And can we think that being a team of 5 members, is this be efficient that we will do CPR efficiently? Like it's very tiring. And I have learned the research. We get to know that in abroad we have machines like who initiate the CPR. As being a human, we get tired of, and it's really very rigorous activity if we do that. See how technology is saving the lives as well. The most effective the CPR,
we earn time, and we know that the time is the money. And in ER, we save the patient. Every second counts. And when we have someone that we have in apps which have like medication, drug dilutions, and the ACLS protocol, we follow every kind of protocol here, the heparin protocol, hyperglycemia, ketoacidosis. I believe that everyone is following that system. But the thing is that how we gonna make it? Sometimes doctors do mistakes. We all are human, and we also do a mistake. And how we can counter-correct them? Just by showing that here is our protocol, it's in our mobile, and if doctor said that give this medication, and you know that this medication is not something that approved from your particular hospitals, like our hospital has our own protocols. So instead of giving that medication, we counter-correct that, doctor, this medication is not in our protocol, or this medication is something which are for. So I believe that if we do things which are good and merge ourselves with the technology, we can do best. And I usually respect all the things that use technology, use nursing documents as your barrier, because we need to save ourselves first and then the patient. And here's where the technologies, where your protocols, where your each and everything will gonna save you. Only when you need, when you know how to use that technology. And in technology, inshallah, it's my prayers to you guys that you will go in abroad and you can see that these hospitals are paperless. I don't know about Indus, but there are many hospitals which are paperless. Can you assume that you don't need a pen? How funny it is. But yeah, that's a reality. So it's my warm thanks for inviting me. All I can say that use the technology, use everything, because we are in the era of technology. We are in the era of artificial intelligence, and we are the one. I'm just concluding my talk with an example that I got to know that the helmet, the idea of helmet was given by a nurse. And how beautiful is this that a nurse who identify that road traffic accidents are everywhere, and it takes lives of the people who go for any kind of internal bleeding, the IC bleeding. So a nurse take initiative, the helmet literally discovered or invented, and how this particular helmet is saving a life. So I'm looking forward to you guys that you guys discovered, invented something great, and thanks again. Thank you so much, Ms. Arisha. I am very happy to welcome our guest, Ma'am Komal Ramzan, who is the clinical instructor of BScN. Today, she will talk about a useful topic, high fidelity mannequins and simulator in patient care. We will excited to learn from you. The stage is yours. Ms. Komal Ramzan. Thank you so much. Yeah, yes, I am available here. Thank you so much for inviting me. So we talk about the mannequins and the simulators. As we already talked about technology before, everyone is talking about this. Since we are already here in the era of AI, artificial intelligence, and everyone is using that. So it's a great initiative in nursing as well, that people are using technology in advanced form for patient care as well as for learning. So let's talk about mannequins first. We all know about mannequins and simulators, as we all have been students before, and we have worked in some way or the other. We have practiced our skills on that. So these are called sometimes patient simulators. These are like the models
that are designed like humans, so that they so for training purposes, and when combined with technology, they can provide advanced simulation capabilities. Like they have realistic anatomical features, which provides basic human structures and functions from where we can learn from it. They have programmable scenarios or situations where we can learn and we can develop our critical thinking skills through it. And they also are very interactive, so we can respond, so we can provide them nursing interventions and then they respond to it. So these are very helpful features of these mannequins. And there are many more benefits of these mannequins, like they provide us with improvement in our skills. We can practice and refine our skills. We have like a real scenario in the virtual environment, so that we can practice safely without harming a real human being. So that's a very great benefit for us, so that we can learn in a more efficient manner. And then we also develop our confidence through this. Like we can be more confident on our capabilities as we are learning and interacting with these mannequins. So they can be applied in many aspects of nursing. Like in nursing education, we all know that we have skills lab in our universities and organizations, where we can interact with various scenarios in the simulation labs and practice them. And in clinical training, it's very useful. And then also in team training, like we work in collaboration in any organization, so it's very necessary to work as a team. So how we build team and collaborate with them, it's very helpful to all of us, all of the healthcare professionals, not only nurses but also other healthcare professionals. So we have some mannequins to discuss that has been introduced in Pakistan as well. Let's talk about them. So first we have this mannequin. We have this mannequin called human patient simulator, that is mostly used for like critical situations. Like it is designed for cardiovascular, respiratory, neurological, and pharmacological interventions. So like it can interact with cardiac monitors and ventilators. Through that we can learn about these critical situations. And then we have the next one is we have SimMen 3G. So it's like it provides us with physiological and neurological symptoms. So it is very helpful for students, so that they can learn with while performing the virtual environment on this model. So they can learn many more things, like how to respond to different symptoms, how to assess these symptoms. And then we have this model called Victoria. Victoria is basically a model designed for maternal health care, basically, like it for providing information and education about childbirth and neonatal care. Like, for example, in labor, different phases of labor, how to assess the situation and how to perform accordingly. Then in antepartum conditions, like high risk deliveries, especially in cases of like the positions are different, especially breech position and all. So it's very helpful to learn in these simulations. And in this area, like for example, if we have a baby delivered and we have a mother, so we can also learn through this environment that how to work as a team as well. It's very helpful in this situation as well. Then we have this newborn, Victoria's newborn as well. We have like the newborn who has been delivered, how to assess the baby at the time of its birth, how to provide care, and how to monitor all the aspects of like ABGAR scoring and rest of the other factors, like the child is breathing effectively and all. And then we have the next is we have this Sim baby. Like this is about the infant care. Like it has all the design related to model that is related to of child functionality, like the child, how he functions and how to assess the milestones development and the vital signs and all the other health assessment related to the infant and the baby. So it also enhances teamwork as well. It helps to develop leadership and communication skills, because with child communication is very important. It's very sensitive to
communicate with child because of his age and all factors. So it's important to deal with in that way. So I think so that's very helpful for us to have technology developed in this way so that we can work in a virtual environment to learn about how to deal with the real health situation. So that will be very helpful for students, for those who wants to specialize in their field, not only in the student life but also in their professional lives. I think so it's very beneficial to learn about these things. Thank you. Now I would like to invite to our upcoming speaker, Wahid Saman from Suhail University, an MSN scholar who will be sharing on top new technologies in nursing. This session will offer valuable knowledge on how emerging technology are shaping the future of nursing. Don't miss the opportunity to learn, please. Yes, sir. Now stage is yours. My name is Waizaman and from Suhail University. My assigned topic is top new technology in nursing. Dear, thank you for participating in the webinar. Please share the slide and screen. Top new technology in nursing. There are more of new technology in nursing, but the foremost are portable diagnostic procedures. Portable diagnostic tools are small, lightweight medical device that nurses can carry and use anywhere. These tools are especially helpful in emergency or when care for patients in places like rural areas, nursing homes, or even their own homes. Example of portable diagnostic procedure device, handheld vital signs monitors, portable ECG machines, portable ultrasound device, portable digital BP apparatus machines. It helpful, save time and make diagnostic procedures. Help in emergency care when a patient can't move easily and improve patient comfort and safety. The next is electronic health records and electronic medication management systems. These are computer-based systems that replace the old paper record used in hospital and clinic. What is EHR? EHR is electronic health records, are digital versions of patient medical history, include information like text, result, medication, allergy, and treatment plan. Nurses and doctors can view or update it anytime from any computer in the healthcare facilities. And EEM, a system that helps manage and take medications, ensure the right medicines is given to the right patient at the right times. Benefits of these is better communication between nurses, doctors, paramedics, and other healthcare professionals, and reduce mistakes. It reduces mistakes like giving the wrong medication or wrong dose. No more issue when hard to read handwriting. Keep our record organized and secure. Please share the next slides. Here, please share the next slides. Robotic
assistance. So what is the importance of robotic helper in nursing? So hospitals are using robots to help nurses with routine tasks. These robots don't replace nurses, they just make their work easier. Types of robotic support is robotic parts. These care layer sample medication and sample from one part of the hospital to another. And blood carrier robots take draw sample with high accuracy. Advantages of that is reduce physical strain on nurses, freeze of time so nurses can spend more time with patients, and decrease human error for tasks like lab handling or drying gloves. The fourth one is telehealth. The telehealth means using technology like phones, video calls, or other applications to provide health care service remotely. Patient can have virtual consultation with nurses or doctor without going to a clinic. Nurses can monitor patient with chronic illness like diabetes mellitus or other chronic disease like heart disease. The patients stay at home and nurses can give advice, check symptom or explain medication over video or phones or give other advices. Helpful. People who live far from hospital or have limited mobility still get care, reduce the need for travel and waiting rooms, and make follow-up care easier and more regular. Lastly, the summaries of all these is technology for portable diagnostic tools, check patient pick anywhere. Advantages save times and improve emergency cares. EHR and EMMS store and manage health records and medication digitally. Its advantage is improve safety and reduce errors. And nursing informatics combine nursing with technologies and data. Its advantage is improve care through better data use. And robotic helper or assistant help with routine physical tasks and reduce nurse workload and errors. And telehealth provide care remotely through video phone, reaches more patients, especially at home. Thank you. Thank you so much, Sir Wahid Zaman. Thank you. Thank you so much, Sir Wahid Zaman, for your valuable time and for sharing your knowledge with us. It is my honor to invite our special guest speaker, Sir Zahurul Haq, Infection Control Officer with strong experience in infection prevention and patient safety. We are glad to have him with us today. He has always guided students and healthcare staff to follow safe practices. Today he will talk on a very important topic, the role of technology in reducing hospital-acquired infections and advancements in PPE. Technology is playing a big role in healthcare, and we look forward to learning more from Sir Zahurul Haq. Sir, we warmly welcome you and invite you to take the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. My name is Zahurul Haq, Indus Hospital and Health Network. आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है टेक्नोलॉजी इन इन्फेक्शन कंट्रोल. सो प्लीज शेयर माय स्लाइड. अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इन्फेक्शन कंट्रोल फुल डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर.
इन्फेक्शन कंट्रोल का मेन मकसद जो हमारा होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल में हम लोग क्या देखते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल का काम क्या होता है और वो कंट्रोल कैसे करते हैं और प्रिवेंट कैसे करते हैं। अगर देखा जाए तो इन्फेक्शन कंट्रोल हमारा काम है, इन्फेक्शन कंट्रोल एज आईसीपी का काम है कंट्रोल एंड प्रिवेंट। अब एक चीज को कंट्रोल कैसे करते हैं और फिर इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है और इम्पोर्टेंट काम होता है। अब यहाँ बात है कि टेक्नोलॉजी का क्या अहमियत है। इन्फेक्शन कंट्रोल फुल डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल में टेक्नोलॉजी को कंप्रोमाइज किया जाता है तो इसका मतलब कि वो इन्फेक्शन की हुई कंप्रोमाइज करते हैं और इन्फेक्शन को ही लेके जाते हैं। अब सबसे पहले अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखा जाए तो इसमें हमारे पास हैंड हाइजीन आता है। अगर हैंड हाइजीन में हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं तो वो टोटली 80%, कम से कम 80% हमारे पास जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन का चांस होते हैं वो है हैंड हाइजीन की वजह से, अगर वो हैंड हाइजीन मिस कर देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि अगर उनको खुद हैंड हाइजीन करना ही नहीं आता, या वो टेक्निक्स गलत कर रहे, या वो टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करते, तो वो खुद ऑलरेडी इन्फेक्शन ही फैला रहे हैं। अगर वो खुद पता नहीं है या खुद वो गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ही कि वो इन्फेक्शन फैला रहे। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टाफ हैंड हाइजीन करता है, वो जाके 7 स्टेप के साथ हैंड हाइजीन परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब वो सिंक के पास जाता है और वो उसके हाथ डर्टी होते हैं, ग्लव्स के बाद जाता है और वो उसको सिंक ओपन करते हैं, जैसे ओपन करते तो उन्होंने स्टाफ ने डायरेक्ट या डॉक्टर ने टच तो किया सिंक को, वही सिंक को दोबारा टच किया। जो जब उसने दोबारा बंद करने के लिए टच किया तो उसने वही हाथों के साथ जो पहले कंटामिनेटेड थे, उन्हें दोबारा वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बग था वही दोबारा लेके पेशेंट के पास गया। तो अगर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है वो है सेंसर। सेंसर किस तरह काम करते हैं, अगर कोई पेशेंट, कोई भी स्टाफ जाता है, सेंसर ऑटोमेटिक जो हमारे पास लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, वो हैंड हाइजीन कर ले। सेंसर से दो बड़े बेनिफिट्स इदारे को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि क्रॉस कंटेमिनेशन इन्फेक्शन के चांसेस उस इदारे में कम होते हैं। जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वहां हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम होगा। कोई भी स्टाफ जाता है हैंड हाइजीन करने के लिए तो वो सेंसर के थ्रू हैंड हाइजीन कर लेते हैं, तो वो नॉन टच तरीके से गया और नॉन टच तरीके से वापस आया, तो उन्होंने अच्छी तरीके से हैंड हाइजीन को परफॉर्म किया। इसमें दो बेनिफिट जो इदारे को मिलता है, एक होता है कि उनके ट्रांसमिशन खत्म हो गए, क्रॉस टच खत्म हो गया। दूसरा, उनके जो वेस्ट ऑफ वाटर है, क्योंकि इदारे जो भी होते हैं ये वाटर क्लीन होता है, जो भी हमारे ओटी में या हॉस्पिटल में जो भी वाटर हम इस्तेमाल करते हैं उसको बाकायदा तौर पर क्लीन करके हम एरिया पे दे रहे थे, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये वाटर जो हमारे ओटी में स्टाफ यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेड। अब दूसरा हमारे पास आ जाते हैं आइसोलेशन रूम। आइसोलेशन रूम सबसे पहले देखा जाए कि आइसोलेशन में हमारे पास होते हैं हर वो पेशेंट जिनको हम आइसोलेट करते हैं आम पेशेंटों से, क्योंकि उसमें हमारे पास टीबी का पेशेंट आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एयरबोर्न पेशेंट है हमारे पास और उसको आइसोलेशन हमने रखना है, तो आइसोलेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव प्रेशर का होना जरूरी होता है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, नेगेटिव प्रेशर के हमारे पास मशीनरी नहीं है, तो वहां पर जो पूरे के पूरे एयरबोर्न का पेशेंट है वो पूरे वार्ड, पूरे एरिया को वो अपने एरिया को उसमें ले लेते हैं, अपने वो इन्फेक्टेड कर देते हैं। क्योंकि इसमें ये भी आ जाता है कि अगर वो नेगेटिव प्रेशर नहीं है तो वो नेगेटिव प्रेशर ना होने की वजह से हमारे मुख्तलिफ एरिया में वो फैल सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे को कांटेक्ट का पेशेंट हो, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकते हैं पेशेंटों के हेल्थ पे। क्योंकि अगर नेगेटिव प्रेशर नहीं है हमारे पास तो वो एरिया क्लीन एयर जो है ना हर एरिया पे सेपरेट होता है और वो प्रॉपर चैनल के थ्रू एरिया से बाहर नहीं जाता। तीसरा हमारे पास है ओटी। अगर ओटी ओटी का तो टेक्नोलॉजी के बगैर तो ओटी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने भी इन्फेक्शन बढ़ते हैं वो ओटी का टेक्नोलॉजी के थ्रू पर मॉडिफाई होना जरूरी होता है। अब हमारे पास जो यहाँ पर जो बड़े सेटअप होते हैं या टेक्नोलॉजी वाले हॉस्पिटल होते हैं जो बड़े सेटअप लेवल पे काम करते हैं, वो ओटी को किस तरह मॉडिफाई करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर टीआईएच पे जो ओटी है, मॉड्यूलर ओटी है,
उस ओटी का ये मेन फंक्शन है कि उसका कोई भी जो जो टेबल या एनेस्थीसिया मशीन या लाइट जो भी है वो ग्राउंड पे नहीं होते। वो ऐसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने उसको फिट किया हुआ है इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो वहां पर पॉजिटिव प्रेशर। यहाँ एक चीज क्लियर होनी चाहिए सब स्टूडेंट्स को कि आइसोलेशन रूम में हमारे पास नेगेटिव प्रेशर होता है थ्रू टेक्नोलॉजी, वो नेगेटिव करते, और ओटी में हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से हमारे पास पेशेंट का इन्फेक्शन चांसेस कम होते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसमें क्लीनिंग जो करते हैं अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम क्लीनिंग से कहते हैं सेंसर का इस्तेमाल करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पहले हैंड हाइजीन में भी मैंने परफॉर्म किया कि हमारे पास जो भी स्टाफ डॉक्टर स्क्रब करते हैं अपने पूरे अपने आप को और फिर ओटी के लिए जाते हैं, सम टाइम क्या होता है कि बाहर से वो स्क्रब करके हैंड हाइजीन को स्क्रब करके जब अंदर चले जाते हैं दरवाजे को दोबारा टच करते हैं, दरवाजे को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होता क्योंकि एनवायरनमेंट इतना हमारा क्लीन नहीं होता। जब वो अंदर चले जाते हैं तो उसमें क्या दोबारा उसने टच किया, जब वो दोबारा टच किया तो उसका स्क्रबिंग खराब हो। तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमने दरवाजों पे सेंसर सिस्टम लगा हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इनका हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास क्लीन एरिया इंटेंस और वेस्ट सिग्रीगेशन इंटेंस जो है ना हमने उनको सिग्रीगेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है। क्योंकि जब क्लीन सीएसएसडी का सामान आता है वो किस दरवाजे के थ्रू आएगा और दूसरा हमारे किस दरवाजे के थ्रू जाएगा। दूसरा, हम इसमें लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास वेस्ट होता है, वेस्ट को हम कैसे लेके जाए और वेस्ट को किस तरह हम क्लीन करें। अब तीसरा जो हमारे पास आता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की बात किया जाए तो ये ओटी से रिलेटेड है। हमारे पास कोई भी सर्जरी हो जाती है को तो पेशेंट का पूरा डेटा हमारे पास HMIS या एक्सेल पे होता है। और फिर इसके साथ हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाते हैं तो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको पूरा 3 महीने 1 महीना उस डेटा को चेस करते हैं, पेशेंट को चेस करते हैं कि इसका सर्जिकल साइड इन्फेक्शन जो था वो ग्रोथ तो नहीं कर रहा, इन्फेक्शन तो पेशेंट को नहीं हो रहा। पेशेंट को हम बाकायदा तौर पर मॉनिटर कर देते हैं। और जो हमारे पास इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं CSSD में इंस्ट्रूमेंट, वो फुल एंड फ्लश हमारे पास उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास किसी एरिया पे पेशेंट का सर्जरी हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है उसकी सर्जरी हुई, तो इसके बाद उस पर जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज हुए, सीजर यूज हुए, ऑटरी फॉर्सेप यूज हुए, मुख्तलिफ जो सर्जरी के सामान था, एनेस्थीसिया सेट वगैरह यूज हो, वो सेट किस तरह क्लीन होगा, वो ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए उसको वॉश किया जाता है। क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन के बगैर उसका क्लीनिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ब्लड बॉडी फ्लूइड लगा होता है। उसमें हमारे स्टाफ को सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, उस स्टाफ को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन है वो लगते हैं, नीडल स्टिक इंजरी का चांसेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले उसको अच्छी तरीके से वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर जो स्टेरिलाइजेशन उसका करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, तो उससे हमारे सर्जिकल साइड इन्फेक्शन उसको रिड्यूस कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। हमारे पास जो फिफ्थ नंबर पर थे एनवायरमेंटल खर्चे, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो भी न्यू अस्पताल या ओटी या कोई भी एरिया पे हमारे पास आउटब्रेक हो जाते हैं डिजीज का, तो उस एरिया पे हम लोग वहाँ उस एरिया की क्लीनिंग देते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मशीन्स होते हैं। इस मशीन के थ्रू हम एरिया पे जाके उस मशीन को सेंट्रल में रख के हम उसका एयर कल्चर लेते हैं। एयर कल्चर, इस बात को याद रखिए क्योंकि हम एयर कल्चर लेते हैं उस एरिया के कि यहाँ का एयर जो है ना वो पेशेंट के लिए कैसे है, सेफ्टी है या नहीं है, सेफ है कि नहीं है। तो वहां मशीन रख के हम उसका एयर देखते हैं कि एयर की वजह से जो हमारे पेशेंट में ग्रोथ तो नहीं है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेट होने, जैसे कि टीबी हो गया या दूसरे हो गए। न्यू एरिया पे जो हमारे एनवायरमेंटल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर न्यू ओटी ओपन हो रही है, न्यू वार्ड ओपन हो रहे हैं, तो वहां का भी हम एनवायरमेंटल कल्चर कर देते हैं और उसको देखते हैं कि ये एनवायरमेंटल पेशेंट के लिए सेफ है कि नहीं। तीसरा हमारे पास जो अहम है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर से ये बात हमेशा याद रखिए कि टेम्परेचर का अस्पताल में टेम्परेचर का मेंटेन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि हमारे पास जो एक टेम्परेचर से एक बात और कि अगर किसी जगह पे हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते थे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इजीली हो जाती है वहाँ। और क्लीनिंग को हम देखते हैं वहाँ हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे डिवाइस होते हैं जो जिसके जरिए हम क्लीनिंग को एसेस कर सकते हैं, देखते हैं कि यहाँ की क्लीनिंग किस तरह हो चुकी है। अब आगे हमारे पास है कि ब्लड सैंपल ट्रांसपोर्टेशन। अगर ब्लड सैंपल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये फुल आजकल
न्यू हॉस्पिटल्स में या न्यू एरिया पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सोच रहे होंगे कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का टेक्नोलॉजी से या इससे क्या ताल्लुक है। देखिए, हमारे पास जो भी सैंपल हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर पेशेंट का ब्लड कल्चर ले लिया, यूरिन कल्चर ले लिया या कल्चर एंड सेंसिटिविटी ले लिया, तो उसको टाइम पीरियड के साथ, पूरे टाइम के साथ ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर हम पेशेंट का जो भी सैंपल ले लिया उसको टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक टाइमली उसको माइक्रोलेब तक नहीं लेके गया, तो वो सैंपल खराब हो सकते हैं और वो हमारे पास पेशेंट का रिजल्ट गलत दे सकते हैं। अगर हमारे पास किसी पेशेंट का रिजल्ट ही गलत आया, हमें उसमें माइक्रो ग्रोथ जो है ना वो बाहर हो गया। एक पेशेंट का सैंपल ले लिया सुबह 6 बजे और वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है 10 बजे या 8 बजे, और गर्मी है और अस्पताल में टेम्परेचर मेंटेन नहीं, तो उसमें ग्रोथ हो जाएगा और रिजल्ट हमारे पास खराब हो जाएगी। दूसरा जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब हमारे पास जो वार्ड बॉय या स्टाफ जो भी इस फेल्बेटनी वगैरह लेके जाते हैं सैंपल को, तो इसमें क्या होता है कि समटाइम उसके हाथ से वो जो ब्लड सैंपल होते हैं वो गिरते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसको निडल स्टिक इंजरी के चांसेस होते हैं, स्प्लैश हो जाते हैं उसके बॉडी पे, तो ये चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हमारे पास ब्लड सैंपल का टेक्नोलॉजी जो हमारे न्यू बिल्डिंग में इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगी, ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अगर हो जाए, इसमें ये होता है कि जहां पर उन्होंने सैंपल ले लिए उस एरिया पे टेक्नोलॉजी के थ्रू एक बॉक्स होते हैं, उसमें सारे सैंपल रखते हैं, विद इन टाइम वो ऑलरेडी खुद ऑटोमेटिक जो मशीनें होती है उसके जरिए माइक्रो लैब तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और इसके बाद हमारे पास जो है यूजेस ऑफ HMIS। HMIS देखिए, अगर जो भी हॉस्पिटल होते हैं अगर उसके पास HMIS सिस्टम है, इस HMIS सिस्टम का काम क्या होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से। HMIS का इंपॉर्टेंस ये होता है, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया और इसका पूरा के पूरा डेटा हमारे पास HMIS में एंटर होता है, जो कि हर अस्पताल का अपना उन्होंने बनाया होता है, एक ऐप होता है हॉस्पिटल का, और उसमें पूरे पेशेंटों का डेटा होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेशेंट आया 1 तारीख को और उसका डॉक्टर ने सैंपल भेज दिया ब्लड कल्चर, और 3 तारीख को पेशेंट DC हो गया। 3 तारीख को अगर पेशेंट DC हो गया, 1 तारीख को आया था और इसके उसमें कोई इन्फेक्शन आया ब्लड में, तो HMIS के जरिए मुझे पता चल सकता है कि अब पेशेंट तो 3 तारीख को DC हो गया, अब मैं 4 तारीख को डेटा कंपाइल कर रहा हूँ, 4 4 डेज का या 5 5 डेज का, तो मुझे ये आसानी से पता चल रहा होगा कि पेशेंट का इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है या कम्युनिटी एक्वायर्ड है। तो HMIS के जरिए हमें पूरे के पूरे पेशेंट का डेटा पता होता है कि पेशेंट इस तारीख को आया था, इस एरिया पे आया था और इस एरिया पे से दूसरे एरिया पे मूव। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंस हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हर एरिया का अपना इन्फेक्शन रेट हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पेशेंट आया ICU में, वो ICU के बाद चला गया वार्ड में, अब ICU में वो 3 दिन रहा और ICU में उसका कल्चर गया हुआ है, और वार्ड में वो 5 दिन रहा, टोटल हमारे पास मिसाल के तौर पर पेशेंट 10 दिन रहा। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट का इन्फेक्शन हॉस्पिटल में कौन से एरिया का है? ICU वाले कहेंगे कि तो हमारा तो नहीं है, वार्ड वाले कहेंगे हमारा नहीं है। तो HMIS के जरिए हमें पता चलता है कि ये पेशेंट का सैंपल यहाँ से गया हुआ है, एरिया से गया हुआ है, और इसमें ये स्टाफों ने इसके ऊपर ड्यूटी किया हुआ है, इसका इस वजह से हमारे पास सैंपल गया हुआ है। तो इसलिए हमें इजीली पता चल जाएगा कि HMIS का क्या काम होता है। जो लास्ट हमारे पास है UVC मार्कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक खास किस्म का हमारे पास डिवाइस होता है मार्कर की तरह, वो एरिया इन्फेक्शन कंट्रोल वाले जाके उस एरिया पे कोई भी पेशेंट हमारे पास जब DC हो जाते तो उस पे हम मार्कर से निशान लगा लेते कि आया इसकी क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो गई है या नहीं। सम टाइम ऐसा होता है कि मुख्तलिफ जो पेशेंट हाई टच एरिया होते हैं उसको अच्छी तरीके से क्लीनिंग नहीं होते, तो उसमें हमारे पास एक UV लाइट का होता है, हम लाइट के जरिए उसको देख सकते हैं, विजिबल आ जाते जब लाइट ऑन कर देते कि इस पे हमारे पास इस एरिया पे क्लीनिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो हमारे पास UV मार्कर का टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ का क्लीनिंग हो चुका है कि नहीं। अब लास्ट जो एडवांसमेंट इन पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, हमारे पास जो PPE में जो तरक्की हो चुकी है, एडवांस आ चुकी है। PPE का काम क्या होता है? देखिए, PPE जो भी स्टाफ डॉक्टर नर्सेज पहनते हैं सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि कोई भी हमारे ब्लड बॉडी फ्लूइड ना लग जाए, स्पेल नहीं हो जाए और नीडल स्टिक इंजरी नहीं हो जाए। पहले जमाने में ये होता था कि PPE इतने एडवांस नहीं थी, बहुत भारी होती
थी और बहुत सख्त होती थी, क्योंकि उसमें चलना उठना बैठना मुश्किल होता है। जब भी हमारे पास ओटी में काम करते हैं या कोई और ब्रेक पेशेंटों पे काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास पहले कोविड आया था और टीबी वगैरह आ गए, तो इस पे क्या करते हैं कि पीपी जब पहनते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है स्टाफों के लिए वहां ड्यूटी करना। उसमें बहुत ज्यादा गर्मी भी हो जाती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती। अब जो पीपीई में एडवांसमेंट आए हैं वो है कि उसमें देखा जाए फ्लेक्सिबल भी है और उसमें फाइब्रिक की है, उसमें इजीली जो मूवमेंट भी हो सकता है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले वाले पीपी में इतना सही तरीके से वो काम इसलिए नहीं करे कि उसमें नीडल स्टिक इंजरी के चांसेस होते थे, जो हमारे पास ग्लव्स वगैरह थे। आजकल जो क्लीनिंग या वेस्ट के लिए पीपी का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हार्ड ग्लव्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन नीडल स्टिक इंजरी का उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। इस तरह उनके शूज वगैरह जो हो गए जो क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज करते थे, वेस्ट मैनेजमेंट में यूज करते, तो वो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाए कि इस पे कोई नीडल वगैरह ना लग जाए। और हमारे पास जो अभी गूगल्स वगैरह आ गए, फेस शील्ड आ गए न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसमें एक हमारे पास ओटी पे एक इम्पोर्टेंट पीपीई में आ गया था। इसमें हमारे पास एक टाइप और भी है कि जो खुद सेंसर थ्रू इसमें लगे होते हैं कि वो अगर कोई बायो एजेंट एरिया ऐसा एरिया है जहाँ गैसेस वगैरह हो, तो वो ऑटोमेटिकली बताते हैं कि इस एरिया पे डेंजर है, टेम्परेचर ज्यादा है, या जो एयर है जो हमारे पास गैसेस है वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये लास्ट था पीपी के मतलब। अगर किसी का कोई सवाल। Tough. Thank you, Sir Zahurul Haq. Thanks for the brief explanation कि टेक्नोलॉजी और नर्सिंग की जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में जो है हेल्प करती है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शंस होती है उसको मिनिमाइज करने में या रिड्यूस करने में किस तरह से हेल्पफुल होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। I'd like to extend my heartfelt thanks to the principal of Indus College of Nursing and Midwifery, Vice Principal of Indus College of Nursing and Midwifery, and Subject Coordinator Sir Muhammad Yusuf Bhatti, and all participants. वाइस प्रिंसिपल सर दानिश सिद्दीकी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो अपनी रिफ्लेक्शन हमारे इस वेबिनार पे दे कि हमारे वेबिनार के हवाले से उनकी क्या रिफ्लेक्शन है। सर दानिश सिद्दीकी। Sir Danish Ali, are you audible us? Unfortunately, he's not in the session. I'm trying to contact him, and he will be joining soon. Okay, sir. Sir, we want your reflection as well. What the sort of the things that we need to look after for this session? Before doing the reflective practice, I must say that if there is any question from the participants who are there in the session, I would like to invite them all to park their questions in the comment box, or if they want to raise their hands to ask any question related to any of the topic by from any of the facilitator. I think Seema Shehbaz has some of the questions. So if she want to join us, then I would like to call her to unmute her mic and join us virtually. Seema Shehbaz, are you audible? Yeah, you are audible to me, but I don't know what you just said because I was doing something. Sorry. It's okay. Seema, she was asking Can if you you have please any repeat question it? regarding the session, regarding any part by any facilitator. No, sir. The session is really informative and hopefully कि सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा. और thank you. मेरा जो question था मैंने chat box में drop किया था and I got my answer. Thank you. Most welcome. अगर किसी वजूहत से हम आपको जवाब नहीं दे पाए या फिर कोई क्वेश्चन से स्किप हो गया हो, then we will share our feedback link to your group and then you can ask there. Sarah, can you hear me? यस सर। दाऊ सर भट्टी हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं सर भट्टी को जो है इनवाइट करती हूँ कि वो जो है आके अपनी
रिफ्लेक्शन दे, क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट था, तो उनकी ही परमिशन, उनके सुपरविजन में जो है हम ये वेबिनार No, no, कर पाए हैं। it's okay. Can you hear me? यस मेरी सर, आवाज आ रही है आपको? सर वी आर आवाज ऑडिबल। आ रही है? यस सर, क्योंकि आई एम ऑन द रोड। आवाज आ रही है? यस सर यू आर ऑडिबल। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, all the material was very much quality and very informative session has been conducted. My students, I really appreciate for this efforts. थैंक यू सर। And secondly, webinar organizer, very much congratulations. आपका जो इस वेबिनार की का जो कामयाबी का जो मेन कोर कॉम्पिटेंसी है वो आपके स्पीकर से, जो आपकी स्पीकर जो आपने सेलेक्ट किए थे, रियली वेरी गुड एक्सपर्ट इन स्पीड। थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया, गाइडेंस दी और हमें ये बताया कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है हमारे नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग प्रोफेशन में। थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली वेबिनार ऑर्गेनाइजर, वेरी मच कंग्रेचुलेशन। आपका जो वेबिनार था वो बहुत इंफॉर्मेटिव था और हमें बहुत अच्छा इंटरेस्टेड लगा, मैंने सारा सुना और आपका जो कॉन्टेक्ट था वेरी रिलेटेड था। थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशन। स्पेशल थैंक्स all speakers. Thank you very much. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच इट सर। वाज इम्पॉसिबल, जब आप हमें परमिशन नहीं देते, आप हमें आपकी गाइडेंस के थ्रू ये सब पॉसिबल हुआ। तो अब जो है फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब मैं हमारे हमारे जो लेक्चरर है सर एहतशाम परवेज को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो अपनी रिफ्लेक्शन दे अबाउट दिस वेबिनार, जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है इंडस कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने जो है इसको इनिशिएट किया। उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है और इसको मजीद हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। सर एहतशाम। Okay, thank you so much. But before starting from my side, I would like to request that from first get the reflection and the review from the external facilitator, since I'm your own faculty and I'm sort of a host as well. So could you please invite the external guest first, please? Sir, due to their clinical rotations, they have left us because Okay. No worries. Okay, so overall, I must appreciate that that was a very good initiative that you guys have taken. You guys have took, and it was very informative. And the most important thing is that you guys included so many audience from versatile, I must say, health-related background. If it was about the simulation topic, or if it was about the theoretical aspect, or if it is about the clinical practice, you overall covered every aspect of what is required to prepare a nurse for the future advancement and how they can inculcate the technology in it. So that was a very suitable and to conduct this seminar webinar successfully. I must say this is one of the greatest example कि हमने एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को इतना इफेक्टिवली यूज किया एंड देन उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आकर हम उस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और उस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये हमें सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये वेबिनार इटसेल्फ है। आज से पहले अभी तक किसी स्टूडेंट ने इंडस के अंदर आई गेस वेबिनार नहीं कंडक्ट किया। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों के इस इनिशिएटिव को। नर्सिंग सेमिनार एक मुद्दत से पढ़ाया जा रहा है, वेबिनार का कॉन्सेप्ट एक मुद्दत से चलता आ रहा है, बट बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे स्टूडेंट्स ने इस नए प्लेटफॉर्म को मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों ने हमें इनवाइट किया एज ए फैसिलिटेटर, जो कि मैं ये कहूँगा कि मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल वे था आप लोगों का हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू ऑल द फैसिलिटेटर्स हु हैव जॉइन्ड द सेशन, even if they were from the Indus Hospital and Health Network or from College of Nursing or from the outer facilities. Thank you so much. Thank you, everyone. सर ये सब आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो सका है। अगर आप लोगों की मोटिवेशन और आप लोगों का बैकएंड पे सपोर्ट हमें नहीं होता तो काश हम तो फिर हमारे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इट्स बिकॉज ऑफ यू वी आर हेयर और हम थैंकफुल हैं हमारे फैकल्टी को। मैं टोटल क्रेडिट आप लोगों को दूंगा। ये आप लोगों की मेहनत है तो क्रेडिट भी आप लोगों का ही होना चाहिए। हम लोग सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर बीच में हमने ज्वाइन किया, तो टोटल एफर्ट मेहनत हर एक चीज आप लोगों के एंड से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर मेकिंग दिस वेबिनार हैपन। सर दानिश, हम आपका रिफ्लेक्शन जानना चाहते हैं आज के वेबिनार को लेके।
Ji, assalamu alaikum to all of you. Thank you, sir. First of all, on the behalf of Principal Sir Hakim Ali Shah Siddiqui, I really congratulate to my students for arranging this interactive webinar, and especially thanks to the faculty members of ICONM, and special thanks to other institutes like AKU and other participants from the other institutes. First of all, this is very good initiate from our students, and I hope that we will continue this interactive webinars or sessions that promote and enhance our education or information. तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई अपने स्टूडेंट्स की एफर्ट्स देख के, और ख़ास तौर पे जो हमारे पास फैकल्टीज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर मिस कोमल हैं, सर एहतशाम हैं, इन लोग ने जिस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए और जो अपनी प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करी, उसके लिए बाकी जो हमारे पास अदर इंस्टीट्यूट से गेस्ट स्पीकर्स थे, आई एम ऑल्सो थैंक्सफुल टू दोज who gives their knowledge to our students. So this is, I think, very helpful for enhancing our knowledge. So thank you so much and keep it up always. Thank you so much, Sir Danish, and thank you so much all the participants. अब हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं, और जैसे कि ताहिरा ने आपको बताया कि आपको फीडबैक फॉर्म्स जो है आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी, और वहाँ से जो है आप अपने फीडबैक्स जो है हमें शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.